Hello, hi, how are you? I am so sorry, थोड़ा सा लेट हो गया है ज्वाइन करने में, बट थोड़ा सा ग्लिच आ गया था विद रिस्पेक्ट टू हाँ द लिंक। ओके ओके, कैसे हो आप सब लोग? कैसे गया ये लेट आप लोगों का? जल्दी जल्दी बताओ। How was your A-Lit examination? ऐसे क्यों बोल रहे हो कि बकवास गया है यार? अच्छा अच्छा होगा। थिंक गुड, बी पॉजिटिव। गुड इवनिंग प्रथमेश, गुड इवनिंग सारांश, गुड इवनिंग हितांश। ओके हितांश, गुड इवनिंग। क्यों? वैसे स्लैट में अगर मैं मानूं तो एसएलएस पुणे इज वन ऑफ द टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज, सो इट इज अ वेरी गुड कॉलेज टू गो टू। तो स्लैट टारगेट करना इज नॉट अ बैड ऑप्शन, आप उसको टारगेट कर सकते हो। गुड इवनिंग रिवान री रिव्यांशिका। ओके, गुड इवनिंग मनदीप। व्हाई देयर इज अ क्वेश्चन मार्क मनदीप? कट ऑफ एसएलएस पुणे। हम्म कट ऑफ 30 के ऊपर जाता है वैसे तो, 30 पर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाता है वैसे तो। बट लेट्स सी पेपर कैसा आता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो स्लैट के लिए प्रिपेयर्ड हो सब लोग? बच्चे आई कैन नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट एलिट एज ऑफ नाउ, हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। वैसे तो मुझे कट ऑफ बहुत हाई लग रहा है क्योंकि इस बार बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया हुआ है, बट लेट्स सी। अभी कुछ कह नहीं सकते एंड थोड़ा रिस्की होगा कुछ भी कमेंट करना उस चीज के को लेकर। बट यस, काफी सारे बच्चों के रिस्पॉन्सेज मुझे जितने भी दिखे हैं विद रिस्पेक्ट टू जितने हमने बच्चों से बात करी है, बच्चों के रिस्पॉन्सेज देखे हैं, तो 120 प्लस इज अ गुड स्कोर फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी हाँ, थोड़ा टफ था, 50-50 था। जिसने पढ़ा था उसका बहुत अच्छा गया था, जिसने हाँ थोड़ा तो था टफ। यस, चलो स्टार्ट करें स्लाइड की लीगल रीजनिंग। वैसे हमने हेलो राशिका। तो जितना भी हम ऑलरेडी एलिट और क्लैट के लिए पढ़ चुके हैं उसका ही मिक्सचर है। मैं अब क्वेश्चंस ही लेके आई हूँ। थ्योरी तो ऑलरेडी हम बहुत सारी कवर कर ही चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लैट और एलिट। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऊपर नीचे हो तो मुझे बताना। ओके। यस, लेट्स गो। चलो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का फर्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करके बताओ। हम प्रिंसिपल इज ऑन द preamble does not grant any power but it gives direction and purpose to the constitution. It outlines the objective of the entire constitution. अब एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि preamble से क्वेश्चन आया हुआ है इन क्लैट। ठीक है, एक क्वेश्चन पूरा पूरा वाज इन preamble प्लस उसके preamble की वर्डिंग्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, इफ यू रिमेम्बर।
तो एक बार प्रियम्बल बस गो थ्रू करके चले जाना, और स्पेशली अगर आपके पास इंटरव्यू कॉल आता है तो इंटरव्यू के लिए भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि प्रियम्बल को अच्छे से करके जाना। दे वी डोंट नो व्हाट दे आर गोना आस्क। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि यू आर एक्चुअली रीडिंग द प्रियम्बल बाय वर्ड टू वर्ड। एसएलएस नोएडा थोड़ा नीचे। ठीक है, वही 25-30। ठीक है, मतलब वही है कि थोड़ा वही रेंज ऊपर नीचे कर लो। आई विल बी ज्वाइनिंग द सेशन। तो आप लोग यहीं रहना, बस 2 मिनट का ब्रेक दे दो मुझे, बस 2 मिनट का, जब तक क्वेश्चन सॉल्व करूँ। ठीक है, आ रही हूँ मैं। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा ग्लिच हो गया है। ओके, आई एम बैक। सो यस, हम क्वेश्चन पे थे। लेट्स बी योर। ओके, आप सब सेट है? वी आर श्योर। ओके, सो प्रियम्बल में बात चल रही थी, प्रियम्बल का क्वेश्चन आया था क्लैट के पेपर में। ठीक है, preamble declares India to be a sovereign, socially secular, democratic republic. A law is passed declaring India to be a theocratic state. A petition is filed in the Supreme Court challenging the law on the ground that it ultra-vires the constitution and it violates the preamble. What do you mean by ultra-wire? फटाफट से मुझे चैट बॉक्स से बताओ, क्या हमने ये मैगज़ीन कभी पढ़ी हुई है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। और आंसर क्या बोल रहे हो? सी, इट डज नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, द preamble has mere persuasive value. It does not violate the constitution as the preamble is not a part of the constitution. It does not violate the constitution as the constitution, especially the preamble, stands amended due to the passage of the law. None of the above. हम ये तो सॉल्व कर चुके हैं काफी बार क्लास में, जल्दी बताओ।
डोंट यू थिंक इन अनदर अबव होगा, क्योंकि हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते ना। वी कैन नॉट एक्चुअली चेंज इंडिया टू बी सम अदर स्टेट। ठीक है, तो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू वायलेट द प्रियम्बल विच इज द ग्रैंड नॉर्म ऑफ इट इज अ, कह सकते हैं इसको कि एक जिस्ट देता है विद रेस्पेक्ट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने इसके ऊपर एक केस लॉ भी पढ़ा है। आप फटाफट से वो केस लॉ मुझे इसमें बता दो चैट बॉक्स में। हमने ए लेट की मैराथन में वो केस लॉ पढ़ा था विद रिस्पेक्ट ऑन यूट्यूब। और आई थिंक जितने बच्चे मेरी क्लास के हैं, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास में भी पढ़ चुके हैं। मूविंग ऑन with the next question. Yes. The fundamental rights guaranteed by the Constitution are enforceable against the state. For their effective implementation, a clear definition of the state is necessary. Principle 2 states the Constitution declares that the state includes the government and Parliament of India. The government and legislature of each state and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. Principle 3 states the judiciary, though not specifically mentioned, comes within the definition of the state while discharging non judicial functions. This is what, which article? हम कौन सा आर्टिकल रीड कर रहे हैं? Hmm. चलो, फैक्ट्स क्या बोलते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज ऑल पर्सन्स द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21. A dacoit is sentenced to death for committing murder by the High Court. He challenges the sentence on the ground that it violates his fundamental right to end life and personal liberty. Decide. Tell me the answer. पहले भी सी बोला था. Sure or C? The appeal will be allowed as a sentence of the High Court if implemented will violate his right to life. The appeal will not be allowed as the judiciary is not capable of violating fundamental rights. The appeal not be allowed as in the present instance the judiciary does not come under the concept of state. अरे ये कैसे बोल सकते हो जब ऊपर लिखा है प्रिंसिपल में कि जुडिशरी दो नॉट स्पेसिफिकली मेंशन कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट व्हाइल डिस्चार्जिंग नॉन जुडिशियल फंक्शंस. The appeal will be allowed as the right to life is the most fundamental of all the fundamental rights, and no order can be passed to extinguish the life of a person. Okay, Avantika is saying A, Mandeep is saying A. अरे क्वेश्चन मार्क क्या बोलते हो यार? मुझे तो तुम लोग आंसर दे रहे हो या क्वेश्चन मार्क बोल रहे हो? आई थिंक मनदीप आर्टिकल 13 पढ़ेंगे सब लोग. जिसने आर्टिकल 13 नहीं पढ़ा है, चुपचाप अपनी स्टैटिक की लीगल की बुक उठा लीजिए सब लोग. सोचो सोचो, थोड़ा और टाइम दे रही हूँ, आराम से सोचो.
पक्का A C B D सारे आंसर्स बोल दिए हैं। द आंसर वुड बी सी। अब बताओ क्यों? क्योंकि इधर पे बोला गया है जुडिशरी दो नॉट स्पेसिफिकली मेंशन कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट व्हाइल डिस्चार्जिंग नॉन जुडिशियल फंक्शन। यहाँ पे तो जुडिशरी अपना जुडिशियल फंक्शन ही अप्लाई कर रही है, सेंटेंसिंग कर रही है। तो इधर पे तो it's not actually performing non-judicial function, it's performing the judicial functions. The appeal will not be allowed, as in the present instance, the judiciary does not come under the concept of a state. हाँ, तुम लोग को कंफ्यूज करना कितना आसान है। Why so easy it is to confuse you? चलो, next question. Principle 1. Article 13(2) of the Constitution declares that the state shall not make any law which takes away or abridges the right conferred by the Article Fundamental Rights. Any law made in contravention of the fundamental right is to that extent void. Principle 2, Article 19(1)(d) states that all citizens shall have the right to move freely throughout the territory of India subject to reasonable restrictions under Article 19(5). Facts are Parliament passed an act prohibiting any person from visiting the Taj Mahal. No reason was stated for enacting the law. A. An Indian citizen and B. A foreign national wished to visit the Taj Mahal but were prohibited from doing so. They challenged the validity of the act in the Supreme Court. Decide. If you were a judge of the Supreme Court, you would what? What would you do? अच्छे से पढ़ना प्रिंसिपल्स। और एक और मैं बात बता दूं, एलिट के अंदर 4 क्वेश्चंस आए थे, चारों प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड आए। ठीक है, और बाकी आई थिंक मेजरली yes, the answer would be B. Declare the law void in relation to A as it violates its fundamental right to freedom of movement. The right to equality mandates that when the government takes an action, it must affect all persons placed in the same situation in the same manner. Facts: a civil war breaks out in the Middle Eastern country where approximately 10,000 Indian citizens reside. For 2 weeks, no help could be extended due to intense fighting. Unconfirmed reports suggest that rebels have placed Indian citizens high on their target list after the Indian government declined to extend support. Indian citizens seek government assistance for evacuation due to intense international pressure. Parties to the civil war declare a 1-day ceasefire to facilitate civilian evacuation. The Government of India launches Operation Relief but can deploy only 5 ships with a maximum combined capacity of 7,000 people, and each ship can make only one trip. As a result, 3,000 citizens would remain in the war zone. Decide.
If you were a judge of the Supreme Court called upon to decide the validity of the government's action by applying the above principle, you would, what would you do? The answer would be B, the order, the government that if it cannot save all, it must not save anyone. ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है with respect to the same. Although judges have that had that justice देने की capacity, but then here the answer would be B. Order the government that if it cannot save all, it must not save anyone. थोड़ा ट्रिकी है ये, तो इस पे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला गया इट मस्ट अफेक्ट ऑल पर्सन प्लेस्ड इन द सेम सिचुएशन इन द सेम मैनर. तो प्रिंसिपल जो हमारा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमको आंसर टिक करना है. ठीक है. रीड द क्वेश्चन. आई विल बी बैक इन अ मिनट. तो आंसर क्या है? जल्दी बताओ. The fundamental right to freedom of association includes the right to form an association as well as the right not to join an association. The fundamental right to freedom of association also includes the freedom to decide voluntarily with whom to associate.
The fundamental right to freedom of association further includes the right to continue as members of an association. The Hindi Sahitya Sammelan is a society registered under the Societies Registration Act. The society maintains an office, and the contract of employment requires all employees to be members of the society. An employee challenges this rule in the Supreme Court on the ground that it violates the right to freedom of association during the pendency of the appeal. Differences arises among the management, leading to another round of litigation. The state legislature intervenes by enacting a law creating a statutory body to take over the assets of the old society. All members of the old society are deemed to be members of the new body, with additional members added by law. The old members challenge the state's action in the Supreme Court. The Supreme Court clubs both matters together, decide whether the employment rule in the contract violates the freedom of association. The rule does not violate the right to fundamental right. Rather, it enforces the right of association by requiring employees to join an association. The rule violates the fundamental right to freedom of association as it also includes the right not to join an association. The rule does not violate the fundamental right to freedom of association as the rule is laid down by the Hindi Sahitya Sammelan. The rule violates the right to freedom of association and it takes away the freedom of employees to decide with whom to associate. सबका आंसर बी. रूल किसने बनाया था? एक प्राइवेट बॉडी ने बनाया था, which was registered under the Societies Registration Act. So hence it is not capable of violating the fundamental rights. So answer should be what? The answer would be C. The rule does not violate the fundamental right to freedom of association as the rule is laid down by the Hindi Sahitya Sammelan. It's a private body which is registered under um, Societies Registration Act, right? Moving on, another similar question. The society maintains an office and the contract of employment requires all employees to be members of the society. An employee challenges this rule in the Supreme Court on the ground of violation of the right to freedom of association. During the pendency of the appeal, differences arise among the management, leading to another round of litigation. The state legislature intervenes by enacting a law creating a statutory body to take over the assets of the old society. All members of the old society are deemed to be members of the new body, with additional members added by law. The old members of the society challenge the state's action in the Supreme Court. The Supreme Court clubs both matters together, decide. एक सेकेंड. मैम प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट क्वेश्चन. अच्छा ठीक है. ये वाला ना. इसमें फंडामेंटल राइट्स जो एनफोर्स्ड हो रहे थे वो थे ओनली अगेंस्ट द स्टेट. स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्स करवाने थे. बट ये जो बॉडी है हिंदी साहित्य सम्मेलन इज एक्चुअली एन प्राइवेट बॉडी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट. तो हेंस इट इज वेरी मच क्लियर कि हम केपेबल ऑफ इट इज नॉट एट ऑल केपेबल ऑफ वॉलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स. समझ रहे हो? जो बॉडी है वो प्राइवेट बॉडी है. अब समझ आया? इट्स नॉट अ स्टेट. बेटर. अब इधर पे जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा.
हाँ, यहाँ पे yes principle is it is not actually referring the principle but then it is अगर आप facts पढ़ोगे the state legislature intervenes by enacting a law creating a statutory body to take over the assets of the whole society. तो यहाँ पे इंटरवीन कर रही है एक स्टेट लेजिस्लेचर करेक्ट। यहाँ पे एक हिंदी साहित्य सम्मेलन सोसाइटी है विच इज रजिस्टर्ड ऑन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब सोसाइटी ही मेंटेन करती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट राइट। उसके बाद the Supreme Court, the state, all members of the whole society are deemed to be members of the new body with additional members added by law. The old member challenges the state action in the Supreme Court. जितने भी हमारे तीनों प्रिंसिपल बात करते हैं अगर आप राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी देखोगे इट इज मोरली टुवर्ड्स द स्टेट। जब भी हम स्टेट की तरफ बात करते हैं तो जब स्टेट फंडामेंटल राइट्स आर गिवन बाय स्टेट तो हम स्टेट की तरफ ही बात करेंगे राइट। यहाँ पे तो ये प्राइवेट बॉडी है तो अगर फंडामेंटल राइट है वो स्टेट के अगेंस्ट ही नहीं जा रहा तो हम कैसे उसको बोलेंगे। तो एग्जैक्टली दैट इज द रीजन द रूल डज नॉट वॉलेट द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। सिमिलरली हियर विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन एज वेल यहाँ पे जो जितने भी ओल्ड मेंबर्स थे उनको उनको नहीं इन्फॉर्म किया गया था विद रिस्पेक्ट टू द न्यू मेंबर्स कमिंग। तो व्हाट शुड बी द आंसर। यहाँ पे भी स्टेट और प्राइवेट एक्शन को देखते हुए आंसर करना। The law enacted by Parliament is not valid as it infringes the right to continue as member of the association. The law enacted by Parliament is not valid as it infringes the right to decide with whom to associate. The law enacted by Parliament is valid as the right is subject to reasonable restrictions. अब मुझे बताओ वैलिड होगा नहीं वैलिड होगा। इस पे कंफर्मेशन लेते हैं वैलिड होगा इनवैलिड होगा। सबके आंसर आ गए हैं। जल्दी आंसर करो। तो इनवैलिड होगा तो दोनों कि दोनों हम ऑप्शन लेंगे दैट इज बोथ ए एंड बी। द आंसर वुड बी डी। Principle states no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. This is known as the rule of double jeopardy under Article 22 of the Constitution of India. A was accused of committing murder. A police investigation was conducted and a charge sheet was filed against him. The court conducted the trial and acquitted A of the charge of murder. Subsequently, on the basis of new evidence, the police conducted a fresh investigation in the case, some case, and again registered a murder case against A. A charge sheet was filed and the trial commenced, ending in his conviction. A challenged his conviction under the constitutional rule of double jeopardy. Decide.
ये डबल जेओपार्डी है नहीं है? Is it a double jeopardy or not? एक अक्यूज था, ए वॉज एन अक्यूज्ड, उसने कमिट किया मर्डर। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, कंडक्ट हुई, चार्जशीट फाइल्ड हुई, लेकिन इन द एंड कोर्ट ने ट्रायल किया और उसको एक्विट कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया। ठीक है, एक बार वापस से फाइल उठी, न्यू एविडेंस आए, पुलिस ने उसकी एक नई रिफ्रेश इन्वेस्टिगेशन करी इन द सेम केस अगेन एंड रजिस्टर्ड अ मर्डर केस अगेंस्ट इट। अब इसमें भी वापस से चार्जशीट फाइल हुई एंड द ट्रायल कमेंस एंड उसके कॉन्विक्ट हो गया। तो क्या ये सेम चीज के लिए ऑफेंस हो रहा है? नहीं, क्योंकि पहली बार जब वो हमने उसको चार्ज उसके ऊपर चार्जशीट फाइल हुई थी, तब कोर्ट ने उसको एक्यूट कर दिया था विद इन। ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी उसका कॉन्विक्शन नहीं हुआ था, ही वाज नॉट ट्राइड। ठीक है, उसका ही वाज नॉट पनिश्ड फॉर द ऑफेंस बेसिकली। इस बार उसको पनिशमेंट मिल रही है, तो यहाँ पे डबल जेओपर्डी नहीं हो। ठीक है, ही वाज ही वाज नॉट he was prosecuted for the same offense but he was not punished for the same offense. The answer would be B, correct. Moving on. चलो यार, बहुत सारे क्वेश्चन है, फटाफट करो। No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. Article 23 of the Constitution of India. Facts: X went to a bungalow of Z, a government official, to offer him a bribe contained in an envelope. Z threw the envelope back at X, who picked it up. The officer called the police. The police asked X to produce the envelope, and X took it out of his pocket. On inspection, currency notes were found inside the envelope and were seized by the police. X pleaded that the currency notes should not be produced as evidence, arguing that this would amount to compelled self-incrimination, thereby violating Article 23. Also, one more thing, जब आप एलिट के पेपर लिख रहे थे, आपके invigilators कैसे थे? There are certain invigilators who yell a lot in the examination hall. तो मेक श्योर क्या करो कि वो थोड़ा धीरे बोले, क्योंकि द इन्विजिलेटर दैट आई वेंट फॉर while I was writing my ALET paper, she was yelling a lot, and it would might have a lot of disturbance for you students. मेरे को डिस्टर्ब हो रहा था, तो आप लोग को तो डिस्टर्ब ही हो रहा होगा। तो जब वो बात कर रहे थे, शी वाज येलिंग एक्चुअली, तो उस चीज का ध्यान रखना। हाँ, अगर वो कॉन्विक्ट हो गया था पहली बार में, तो वी कैन नॉट फाइल अनदर केस, तो वो दोबारा नहीं हो सकता। उसके जितने चार्जेस उसमें लगे थे, देन इट इज गोइंग टू बी दैट ओनली। फटाफट बताओ यार इसका आंसर, जल्दी 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 जल्दी। क्या वो अक्यूज था while he was giving the envelope? Was he accused or was he not an accused? ये वॉयलेट तो नहीं करेंगे, ठीक है, वो अक्यूज नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो अपने खिलाफ ही खुद के खिलाफ एविडेंस नहीं दे रहा था। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ द सीज करेंसी नोट्स एज एविडेंस डज नॉट वॉयलेट हिज राइट। ए एंड सी बोथ आर गोना बी ट्रू, तो आंसर वुड बी डी, हियर। ठीक है, मूविंग ऑन। देर आर सर्टन लीगल मैगजिम्स आई वुड लाइक यू टू नो एंड अंडरस्टैंड, ये इंटरव्यू के टाइम पे काम आ सकता है आपके, या फिर पेपर में भी कहीं ना कहीं काम आए। Actus non facit trium nicis mens citria. That means the act does not make a person guilty unless the mind is also guilty. Ignorantia juris non excusat. Ignorance of law is no excuse. Uh, इसके ignorance of fact भी एक वो होता है, term होता है, but then that is not valid in India. Audi ultram partem, here the other side. No one should be condemned unheard.
It nemo judax in causa sua, no one should be judged in his own case, which we have a section also dedicated to it towards. Ubi just ibi remedium, where there is a right, there is a remedy. ठीक है, तो थोड़ा सा हम रिविजन भी कर लेते हैं while we are actually doing the questions. Moving on, res ipsa loquitur. ये मैगजीन्स पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने या नहीं पढ़ी है? The thing speaks for itself. Ex post facto, laws made after the act cannot apply retrospectively. Voluntary not for injuria. No injury is done to a person who consents. ये एक डिफेंस भी है किसमें? लॉ ऑफ टॉर्ट्स में. Qui facet per alium facet per se. He who acts through another acts himself. Injuria sine damnum, illegal injury without actual damage. Nullum crimen sine lege. No crime without law. Mens rea is guilty intention. Actus reus is guilty act. De minimis non curat lex. The law does not concern itself with triples. इसके ऊपर we have a dedicated section. It was under IPC. Now it is under BNS. Bis non idem double jeopardy. No one shall be punished twice for the same offense. हमने अब ये पढ़ा आर्टिकल 20. ठीक है, इसके बारे में बात करता है. Consensus ad idem, meeting of minds, that we have already is always studied in contracts. Quid pro quo, something in return, something for something भी कहा जाता है. So that is one of the maxims. Caveat emptor, let the buyer beware. Caveat एक seller के ऊपर भी है same. I don't remember exactly, but yeah, there is something for the same as well. Pacta sunt servenda is agreements must be kept. Quantum merit as much as earned. चलो टॉर्च लो पे आते हैं फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो. An injunction is an order of court restraining the commission, repetition, or continuance of a wrongful act by the defendant to be entitled to an injunction. A party must prove actual damage or apprehend damage. The apprehended damage must involve an imminent danger of a substantial kind and must be irreparable. X, a senior citizen, rented an apartment in a colony meant for retired official. The area was calm and serene, with very little noise pollution. X intended to impart piano lessons to students from his apartment. The residents of the area resisted the idea and tried to dissuade X. X assured them that he would regulate the number of students and conduct lessons at such hours that no inconvenience would be caused. Despite this, the residents approached the court seeking an injunction against X on the ground that his action may cause nuisance. Decide. पक्का ये होगा सी नहीं होगा. An injunction against X cannot be granted as apprehended danger is not substantial or irreparable. हमारे यहाँ पे सब्सटैंशियल और इररेपरेबल दो वर्ड्स यूज करे हैं, तो अगर हम एक की जगह सी वुड बी इफ वी आर गोना चूज देन दैट इज मोर inclining towards our principle. ठीक है. Moving on, an injunction is an order of a court restraining the commission, repetition, or continuance of a wrongful act by the defendant. To be entitled to an injunction, a party must prove actual damage or apprehend damage. The apprehended damage must involve an imminent danger of a substantial kind and must be irreparable.
Facts. A senior citizen rented an apartment in a colony meant for retired officials. The area was calm and serene with very little noise pollution. X intended to impart piano lessons to the students from his apartment. It's the same question, I think. Let's change the question. हमने same question देखा, right? Yes. Yes. A violation of a legal right, even without causing any harm, loss, or damage to the plaintiff, is actionable per se. Bhim and Sena friends. Bhim is elected as a member of the state legislative assembly. On the first of the new session of the assembly, Bhim reaches the assembly premise accompanied by Sen. Sen attempts to enter the assembly along with Bhim. Both Bhim and Sen are detained by the police. We have already done this question in many of the sessions, I believe. Police are released after some time. Due to the police action, Bhim misses the assembly session for a day. Both Bhim and Sen file separate suit for false imprisonment. Decide. किसको false imprisonment कहा जाएगा और किसको नहीं कहा जाएगा? किसके लिए कहा जाएगा और किसके लिए नहीं कहा जाएगा? किसकी सूट वुड बी फेवरेबल, किसकी सूट फेवरेबल नहीं होगी? Yes, the answer would be B. क्यों का B? Beam was an MLA and who was Sane? Sane के पास कोई लीगल राइट था? Beam is an MLA. So yes, Beam has a legal right. Does Sane has a legal right? Correct. So answer would be B here. The suit filed by Beam will be decided in his favor. क्योंकि हम सेन की बात ही नहीं कर रहे. कैसे करेंगे? He does not have any legal right. So here, the suit filed by the Beam will be decided in his favor. Okay. Arjuna sports journalists went to cover a bike race at KP International Circuit. Journalists were seated in the press box and were instructed that they could interview participants and enter the racing arena only after the race was over. After the race, Arjuna entered the track to interview the owner of the winning team. Meanwhile, Ranveer, the winner of the race, was taking victory laps, raised his hands and lost control of the bike.
एज अ रिजल्ट अर्जुन जो उनको परमिशन दी गई थी विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होता है, जब भी सॉल्व करो अच्छे से सॉल्व करो। तो इसके अंदर जब वो उसका इंटरव्यू ले रहे थे, इंटरव्यू के बाद, सॉरी, रेस के बाद बोला गया था कि आप रेस के बाद जर्नलिस्ट सारे इंटरव्यू ले सकते हैं, राइट? नाउ हियर अर्जुन कैन फाइल और कैन नॉट फाइल, मुझे बताओ, क्योंकि वो जो लैब ले रहा था वो रेस के बाद ले रहा था और उनको इंस्ट्रक्शंस क्या थे? इज माई वॉइस स्टिल ब्रेकिंग? आई थिंक कुछ नेटवर्क लैग आया था बीच में, आई डोंट नो व्हाई, बट देयर वाज अ नेटवर्क लैग। ओके, so here Arjun has a cause of action as the injury was caused by the negligence of Ranveer is the correct answer। अगर उनको ये वार्निंग दी नहीं गई होती और अगर रणवीर, अगर दी भी गई होती और रणवीर अपने विक्ट्री लैप नहीं कर रहा होता, नॉर्मल रेसिंग की तरफ रेसिंग कर रहा होता, तब उसको लगती तो यस, तब अपन कह सकते थे कि अर्जुन कैन नॉट हैव अ कॉज ऑफ एक्शन, बट हियर ही हैज अ कॉज ऑफ एक्शन एंड ही कैन फाइल एक्शन एज एन इंजरी वाज कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस ऑफ रणवीर। ठीक है, द आंसर वुड बी डी। मूविंग ऑन to टॉट्स का ही क्वेश्चन है अगेन, अ plaintiff cannot be met with the defense of himself being the wrongdoer unless his act is a determining cause of the harm suffered. The government built a check bund over River Juru to prevent river water from entering nearby fields. After completion, allegation arose that substandard material were used. An injury committee confirmed this and declared the bund unsafe. The government issued a notice instructing farmers to avoid over irrigation as waterlogging might cause the bund to collapse. One day, Ankit, who owned a farm near the bund, left his tube well open, causing waterlogging near the bund. As a result, the bund collapsed, flooding nearby farms and damaging crops. Ankit filed a suit against the government, claiming compensation for his loss. The government raised the defense that Ankit himself was a wrongdoer. Decide. जल्दी बताओ आंसर, जल्दी। हमने एक डिफेंस पढ़ा था, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, याद करो उसको अच्छे से। और वही प्रिंसिपल भी है हमारा। इज अंकित अ रॉन्ग डूअर हियर? इज ही द रॉन्ग डूअर और नॉट? फटाफट बताओ। Correct, Mandeep. The answer would be A because he was the wrongdoer. Ankit Kini met with the defense of himself being the wrongdoer as his actions were determining cause of the injury suffered by him. Moving on, inevitable accident के ऊपर क्वेश्चन है।
Goni bought a new sports bike for his son Jadu. On a rainy day, Jadu took the bike for a ride. As it was raining heavily, very few people were using the highway. At a turn, Moholi was trying to cross the road. Jadu suddenly noticed Moholi in front of his bike. Jadu was riding the bike at a fairly high speed. He applied the brakes, but due to slippery roads, he lost control of the bike and injured Moholi. Moholi filed a suit against Jadu for causing injuries. Decide. Was it an inevitable accident or not? Then what would be the answer? The answer would be A. Jadoo cannot claim the defense of inevitable accident. Inevitable accident serves as a valid defense and action of for torts, but here he cannot claim for the same. A purchased a bungalow. This is an act of God. A purchased a bungalow from Delhi DDA. After a few months, due to natural lighting strike, the electrical wiring of the house short-circuited, causing a fire. On investigation, it was revealed that no preventive provisions were made in the house to guard against such an eventuality. A filed, A filed a suit against the DDA claiming damages. The DDA pleaded the accident was an act of God and therefore it could not be held liable. Decide. Because inevitable accident refers to an unexpected injury जो कि हम फोर्स ही नहीं कर सकते या अवॉइड नहीं कर सकते आफ्टर टेकिंग रीजनेबल केयर। यहाँ पे जादू जब राइड बाइक कर रहा था इट वाज अ हाई स्पीड और वो भी रेनी डे था। ठीक है। ये नहीं कहा जा सकता कि उसने एक रीजनेबल केयर लिया या ये भी नहीं कहा जा सकता कि उसने एक इंजरी को फोर्स ही भी किया था। ही कुड हैव डन दैट बट व्हाट ही डिड ही वाज राइडिंग द बाइक एट अ वेरी हाई स्पीड इन रेनी डे। समझे? Here the answer would be what? सब एक क्यों बोल रहे हैं? पक्का है?
The answer can be A also, the answer can be D also. अगर वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं प्लीड कर रहा है, बट वी डोंट नो ना कि वो नेचुरल स्ट्राइकिंग की वजह से हुआ या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। हमें कुछ भी नहीं मालूम। करेक्ट, करेक्ट। अब वो इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन्होंने बोला प्रिवेंटिव प्रोविजंस नहीं थे। ठीक है। और एक नेचुरल लाइटिंग स्ट्राइक तो हुई हुई थी। तो इधर द आंसर कैन बी ए, इधर द आंसर कैन बी डी। यहाँ पे दोनों आंसर हो सकते हैं। हाँ, मतलब भाई ए और डी में से अगर मोस्ट प्रोबेबली चूज किया जाए तो द सेफेस्ट ऑप्शन कैन बी डी, बट देन द आंसर कैन बी ए एज वेल। मोस्ट, अगर मैं क्लोजर पे जाऊं तो। द नेक्स्ट क्वेश्चन। Robert and Mona are married. Soon after the marriage, differences arose between them. Robert began to physically abuse Mona and frequently inflicted battery upon her. One day, Mona accidentally dropped Robert's phone on the floor. Robert became enraged, slapped Mona, and warned her that the next time she made a mistake, he would kill her. Mona was deeply shaken by the incident. A few minutes later, she accidentally dropped Robert's laptop. Before Robert could say anything, Mona hit him with a flower vase. During the trial, Mona claimed the right to private defense. The law permits the use of reasonable force to protect one's person or property. In other words, the law recognizes the right to private defense. Such force may be used only in case of imminent and immediate danger. Was there an imminent danger? और सबने डी बोल ही दिया. Yes, Mona exceeded her right to private defense as there was no imminent threat of harm. ये mistake के ऊपर question है whether of fact or law is generally a no defense in action of torts. An exception exists where the defendant has acted in reliance on the conduct of the plaintiff and such reliance induces a mistake, in which case the defendant may be absolved. A series of thefts were reported in a market famous for gems. The shopkeepers began their own investigation and identified a person X as a suspect with certainty. The shopkeepers association placed X under surveillance, intending to catch him red-handed. One night they saw a person resembling X in the area. As he did not attempt any break-in, they did not apprehend him. Another theft was reported the following morning. That night, the surveillance party again saw the same person resembling X taking rounds in the area. They apprehended him and placed him under the complete restraint for 2 minutes. He was then released and subsequently filed an action for false imprisonment against the defendants. Decide. The defendants can claim the defense of mistake. The defendants cannot claim, need not claim. बताओ, they can claim or they cannot claim. They can claim or they cannot claim. The defendants can claim the defense of mistake क्योंकि उनको लगा कि y x है और वो consecutive days में हुआ. तो that's why I think हम जैसे ही वो चीज हुई उसके बाद उनको y दिखा.
सिमिलर केसेस थे ये, इसलिए। Mistake, whether of fact of law or law, is generally no defense to an action in tort. An exception exists where the defendant has acted in reliance on the conduct of the plaintiff, and such reliance induces a mistake, in which case the defendant may be absolved. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यार एक्सेप्शन है एक, और उस एक्सेप्शन पे अगर करेगा तो फिर हम कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। आई थिंक दिस इज द सेम क्वेश्चन। Which when one person, acha, contract law. So we have changed the subject now. It is contracts. When one person signifies another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such an act or abstinence, he is said to make a proposal. When a person to whom such willingness is signified assents to the proposal, he is said to have accepted the offer. A and B are friends. A says to B, I will give my car to you. B replies, I will give rupees 50,000. Later, B refuses to keep his word. A moves to court contending that a valid contract has come into existence and the B has committed breach of contract. Decide. यहाँ पे उसने बोला ही नहीं था कि कोई कंसिडरेशन मांग रहा है वो, तो ये कैसे हो सकता है वैलिड? इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बोलूं ए बोल रहा है कि आई विल गिव यू माई आई एम सेलिंग माई कार विथ रिस्पेक्ट टू 50,000 रुपीज, तो यहाँ पे वो बात भी होती, बट इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर। A valid contract has not come into existence as no offer was made by A. The answer would be A. Moving on, an invitation to offer is not an offer but an offer to negotiate. It merely indicates the process preceding the making of an offer. An offer involves both a promise and a request. An airline advertisement states fly from Delhi to Mumbai from rupees 6,200. Call our customer care. X calls customer care to book a ticket for a coming. It's an invitation to offer, wala example, right? X contends that the advertisement constituted an offer which he accepted. Decide. The airline has made an offer on the advertisement contains both a promise and a request. The airline has made an invitation to offer as the advertisement contains only a promise. The airline has made an invitation to offer as the advertisement contains a request and not a promise. Airline has neither made an offer nor an invitation to offer. What would be the answer? The answer should be C, right? Tell me the answer.
Okay, I am back. I'm so sorry. There was an urgent call. I had to take it. Yeah, the answer would be C, correct. Moving on, a contract is formed when the communication of acceptance is complete. Communication of acceptance is complete because of these two reasons. Acceptance may be revoked before it reaches the offeror. X posts a letter to Y on 3rd January 2015 offering to sell his farm for rupees 50,000. Y receives the letter on 5th January 2015. X posts his acceptance on 7th January 2015. X receives the acceptance on 9th January 2015. Tell me what is going to be the answer. It is very easy. We have done this question many times. सी कैसे होगा? एक्स ने लेटर भेजा था 3rd जनवरी को, ठीक है, ऑफरिंग टू सेल हिज फार्म ऑन 50,000 रुपीज, ठीक है। वाई रिसीव द लेटर ऑन 5th January। अब एक्स वाई ने पोस्ट कब की अपनी एक्सेप्टेंस 7th को, जिसकी कॉन्फर्मेशन मिली है उसको 9th January को, ठीक है। तो आंसर शुड बी डी, नो। ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस अगेंस्ट एक्स ऑन 7th January, जब उसने पोस्ट कर दी, एंड अगेंस्ट वाई ऑन 9th January क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, उसको एक्सेप्टेंस मिल गया। द आंसर वुड बी डी। इसमें पोस्टल रूल लगेगा, याद रखना, हमने इसके ऊपर क्वेश्चन किया हुआ है ऑलरेडी। Santa says to Banta, plug my field and I shall pay you rupees 1,000. Banta feels ill and asks his son Zanta to plug the field. Zanta plugs the field, but Santa refuses to pay. But Banta and Zanta sue Santa. Here, Banta can sue, Zanta cannot sue because Zanta was what? His son. He was not asked to plug the field. Banta was asked to feed. It is a very easy question. इसको भी हम 10 बार कर चुके हैं. Privity of contract का एक सिस्टम होता है. He who is there in the contract can sue each other. Zanta था ही नहीं उस contract में, तो sue कैसे करेगा, right? So only Banta can sue. A threatens B that if he does not sell his land for rupees 50,000, A will elope with B's daughter. B sells the land and later seeks to set aside a sale on grounds of coercion. इसका आंसर भी आप लोग को पता है. इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. फटाफट बताओ. द आंसर इज गोना बी व्हाट? देयर इज नो undue influence. सॉरी, देयर इज नो coercion involved here क्योंकि शादी करके भागना इज नो coercion, राइट? कैसे हो सकता है coercion? शादी करना इज नॉट अ क्राइम, या इलोप हो जाना इज नॉट अ क्राइम, तो कैसे होगा? करेक्ट. Next, we are coming up for the undue influence. A salesman persuades A to buy a more expensive TV using false statements to earn higher commission. अब यहाँ पे एक दूसरे के लोग नहीं जानते थे पहले से, ये तो नया नया वो था, रिलेशनशिप पहले से एग्जिस्ट करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अनडू इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे इट वुड बी नो अनडू इन्फ्लुएंस. फिर a shopkeeper says, I believe this is the best microwave. Buyer knows it. Uh, it is not the best, but buys it for a compact size. Statements. False statement addressed to plaintiff, qualified opinion, no inducement. Options. Tell me the answer. The answer would be qualified opinion, no inducement.
वाई बिकॉज उसने बोला था आई बिलीव और बायर को जब पता था तो उसको नहीं लेना चाहिए था तो हाउ कैन बी इट बी मिसरिप्रेजेंटेशन. A property dealer does not disclose that property prices are likely to fall. Fraud requires active concealment with intent to deceive. Now tell me the answer. ये tricky questions हैं. The answer would be D, no fraud as information was given. Cargo agreed to be sold was already lost at sea without parties acknowledged. Mutual mistake as to matter of fact, essentially the agreement renders it void. The answer would be void due to mutual mistake. X, a minor, agrees to sell his house to Y. His mother seeks cancellation. Only a major of sound mind can contract. Contracts with minors are void ab initio. The answer would be C, void ab initio. As soon as you see a minor, you opt for void ab initio. ओके सो हियर आर फ्यू लैंडमार्क जजमेंट्स जो हमने क्लैट की क्लास में भी रेफर किए थे क्लैट मैराथन में हम थोड़े बहुत इसमें भी देख सकते हैं सो वी डिड डिस्कस बिल्किस बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसका इशू था वैलिडिटी ऑफ रिमिशन ग्रांटेड टू 11 गैंग रेप एंड मर्डर कॉन्विक्ट्स इसके बारे में हमने डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दी थी गुजरात रिमिशन ऑर्डर्स एज इलीगल held only trial state Maharashtra had authority और इसका impact था reinforced due process and clemency major win for women's right and rule of law. Electoral bond case tha, which came in Feb 2024. The full form of that was Association for Democratic Reform versus Union of India. इसके अंदर ये था कि पॉलिटिकल डोनेशंस हो रहे थे एनोनिमसली रूलिंग थी कि एससी ने स्टेप डाउन किया था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉलेटेड वोटर्स राइट टू नो व्हिच वाज अंडर आर्टिकल 1A. इसका इम्पैक्ट था बूस्ट टू ट्रांसपेरेंसी इन कैंपेन फाइनेंस रीशेप पॉलिटिकल फंडिंग नॉर्म्स. Arvind Kejriwal versus ED, July 2024, unlawful arrest under PMLA. The ruling said, the SC Supreme Court said, granted bail, arrest lacked and need and necessity. Also, it sent key questions on PMLA arrest to larger bench. Boost to personal liberty, इसका impact आया था, restricts ED's power, sets stricter bail norms. हमने ये already cover किया है with respect to the legal current affair class. अगर आप जाके देखोगे पूरा एक जो power pack आपने एक पूरा वो किया था उसके अंदर. State of Punjab versus Davinder Singh, subclassification SC quota. Can SC quota be split for subgroups, which was overruled by E.V. Chinnamma? Allowed subquotas within SCs and STs. Impacts enables targeted affirmative action, major shift in reservation policy. Then there was a case for child pornography versus POSCO, and POSCO, which came into September 2024. It was just rights for children versus Harish. Is mere possession of CP criminal under POSCO? Child pornography is under POSCO, so the Supreme Court said yes, even non-commercial possession is punishable, which strengthens online child protection platforms now liable to remove child porn or face action. Bulldozer guideline case, a demolition without notice post-communal incidents. Supreme Court barred punitive demolitions, mandated 15-day notice hearings, officer accountability. Also, it impacted upheld due process and shelter rights, curb on executive overreach. Then we have AMU minority status case, which came in November 2024. The issue was, can AMU claim minority institution status? तो एससी ने ओवररूल किया था अजीज बादशाह एंड recognized AMU's right to be a minority funded body. Final status referred to smaller bench. Also, इसका impact था expense right under Article 13(1) affects hundreds of minority run colleges. Assam Accord and Citizenship, which came in October 2024, issue tha is Section 6A of Citizenship Act unconstitutional. SC upheld Section 6A. Parliament can set special cutoffs for Assam. Impact was protects migrant citizenship.
Rights clarifies federal flexibility in citizenship laws. Judicial recruitment eligibility, All India Judges Association versus Union of India. Can fresh law graduates become judges? SC mandated 3 years for practice before civil judge exams, which elevates quality of lower judiciary and affect thousands of judicial aspirants. That is all we have already discussed. Everything else in CLAT and ILIT marathon. I believe वो भी आप जाके देख लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा. बाकी अपनी स्ट्रैटेजी के अच्छे से रखना, लीगल करंट अफेयर्स छोड़ना मत, सब कुछ पढ़ के जाना. ठीक है? आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माय एंड. आपकी स्लैट मैराथन के सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे तो बी प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल. स्लैट का पेपर 9 बजे से है 10 बजे तक, तो जल्दी पहुंच जाना अपने टेस्ट सेंटर पे. और एलिट के बारे में और क्लैट के बारे में मत सोचना इतना. रिजल्ट तो तब तक आई थिंक आ जाएगा. रिजल्ट इज मोस्ट प्रोबेबली टू कम ऑन. कब आ रहा है रिजल्ट? मोस्ट प्रोबेबली टू कम ऑन 17th. अर्ली मॉर्निंग आई बिलीव या फिर लेट, कुछ भी कह सकते हैं. टेंटेटिवली बोला गया है ऑन 17th, तो आई थिंक अर्ली मॉर्निंग आ जाए. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल. और स्लैट के लिए शांति से पेपर लिखना. एसएलएस पुणे को भी आप टारगेट कर सकते हो. इट्स अ वेरी गुड कॉलेज. अगेन, थोड़ी फीस इज इन द हायर एंड. इफ यू कैन अफोर्ड यू कैन गो फॉर इट, राइट. बाकी एनएलयूज की फीस भी इतनी कोई कम नहीं है. तो बाकी ऑल द बेस्ट एंड आई रियली होप कि आपके सारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स बढ़िया हैं. और 82.25 गुड स्कोर फॉर एलिट. थोड़े से कट ऑफ्स हाई दिख रहे हैं बच्चे, तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट. देखते हैं बाकी रिजल्ट्स पे. देखते हैं. ठीक है, मिलेंगे 18th को फॉर एलिट रिजल्ट्स. चलो, बाय बाय, टेक केयर. ऑल द बेस्ट फॉर स्लैट एग्जामिनेशन. बाकी मैराथन्स आपकी लाइंड अप रहेंगी. बाय बाय, टेक केयर.